Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to your English class in the Scholars Science College. I, Rabia Abdul, here again to teach you English. Yes, in the previous lecture, we have learned something about 2.1, its country for me. In that chapter, we have read something about Joel. Joel, who was he? Yes, do you remember that? He was a teenager of 13 years old who lives in the farm with his parents and sibling. Joel is also there to help his family members, his father, to work in different farm and different farming, you can say that acts. Yes, dear students, today we will start from page number 41, second paragraph. Joel Holland has lived on this 245-acre farm since he was born, 13 years ago. Yes, I have told you earlier that Joel was a teenager of 13 years. So, 13 years before जब वो पैदा हुआ, उस वक्त से वो जोल इस हॉलैंड फार्म पर, इस खेत पर 245 एकड़ का जो एरिया है ये फार्म का, यहाँ पर रह रहा था. It is the form of his ancestors. Yes, students, ancestors, forefathers. Ancestors, forefathers. जो आपके parents, grandparents होते हैं, आबाओ अजदाद होते हैं, उनको बोलते हैं ancestors. He lives in the house that his great grandfather built. और वो उस घर में रहता है जो उसके great grandfather means उसके परदादा ने बनाया. The land he helps his father and brother farms is land that his great-great-grandfather James Holland bought in 1860. और वो ज़मीन जहाँ पे James is going to live and helping his father and brother, that land is being bought by James Holland. Who was James Holland? परदादा के परदादा, great-great-grandfather. और कब खरीदी उन्होंने ये ज़मीन? 1860 में. James was an Irish immigrant. Yes, dear students, I think so you should have some idea about immigrant. It is, you can say that from migrate, word migrate, immigrant. Basically, immigrant, a person who has left his homeland to live in another country. Dear students, you know this thing that our authoress has also started living in America. Same is the case, James Holland has left Ireland and started living in America. So he was an immigrant, that he is a person who has left his homeland to live in America. He drove a team of horses to plow the land and make it ready for corn. Yes, at that time, he is not having any, you can say that facilities, so that's why he is using 2 or 3 horses combined to plow that field, to plow that farm and make it ready for farming. Now, 5 generations later, 5 generations गुजर जाने के बाद, Joel plows the same land atop a tractor that has the power of 120 horses. That after 5 generations, Joel is there to plow that land with the help of a tractor, and that is having the power of 120 horses. The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. और बेटा ये जो उनके पास स्याह रंग की ज़रख़ेज़ मिट्टी है, इसके साथ हॉलैंड ख़ानदान ने 120 सालों से पैम्पर्ड मीन ट्रीट विद एक्सेसिव केयर, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केयर के बहुत ज़्यादा मुहतात और अच्छा रवैया उन्होंने उस हॉलैंड फार्म के साथ 120 सालों से रखा हुआ है. यस, इस ज़रख़ेज़ स्याह मिट्टी के साथ हॉलैंड ख़ानदान ने 120 सालों से ज़्यादा मोहब्बत भरा, केयर वाला और अच्छा बरसलूक किया है. फार्मिंग इट इज़ Joe's heritage. What do you mean by the term heritage? Heritage
inherited property. Dear students, you should know this thing that there are different things in inheritance. For example, some people are getting property, money, cars, bank balance and all that. But in this case over here, Joel is there to get that form, to get that land in inherited property. In the last paragraph, in the previous lecture, I have told you the last line, farming is Joel's world. And over here, farming it is Joel's heritage. These are the things, these are the sentences that are giving us the clue that how much Joel is there to like farming. Yes. Next paragraph. Now, in this paragraph, the writer is there to tell us something about Holland forms, that you also have a question in your exercise, describe Holland forms, that this is relevant to that question. The Holland form is near Scales Mount, a tiny town of 400 people snuggled in the northwestern corner of Illinois. Snuggled, beta, to live together closely. To live together closely. ठीक हो गया बेटा? हॉलैंड ख़ानदान का ये जो खेत है इलिनॉइस के समाल मगरबी कोने में ज़्यादा करीब, लिव टुगेदर क्लोजली यानी ज़्यादा इकट्ठे जुड़े हुए, करीब करीब रहते हुए 400 लोगों पर मुश्तमिल एक नन्हे कस्बे के करीब है. द लैंड देयर इज़ हिली रोलिंग इन ग्रेट वेव्स. और वहाँ पे जो मौजूद ये बड़ी बड़ी लहरों की तरह लुढ़कती हुई जो ज़मीन है, जो ज़मीन वहाँ पर मौजूद है वो क्या है? पहाड़ी है. And in fact, just a few miles away is the highest point in the state. और बेटा चंद ही स्टेप्स आगे, कुछ मील के फासले पर अगर उसे आगे जाएं तो वो उस स्टेट का, उस रियासत का हाईएस्ट पॉइंट है. टॉप पे हाईएस्ट बुलंद तरीन मुकाम वहाँ पर कुछ माइल्स अवे मौजूद है. Joel attends public school in Scale Mount in a split-level brick building with 235 other grade school and high school pupils. Yes, dear students, now as in the previous paragraph, the authoress is there to tell us something about Holland forms, and now she is there to tell us about Joel. Split-level brick building, basically split-level, a building having rooms higher than one another by less than a whole story. Different levels, different floors पे जो आपकी एक ही बिल्डिंग में रूम्स और पोर्शंस होते हैं. लेकिन बेटा यहाँ पर अगर इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ हम देखें तो स्प्लिट लेवल ब्रिक बिल्डिंग हमें शो कर रही होगी डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट स्कूल, कि वहाँ पे प्राइमरी लेवल की भी, जूनियर लेवल के, सीनियर लेवल, मिडिल, डिफरेंट लेवल्स की बिल्डिंग में वहाँ पे पोर्शंस हैं, रूम्स हैं, फ्लोर्स हैं जहाँ पर क्लासेस और स्टूडेंट्स मौजूद हैं. सो Joel attends public school in Scale Mount in a split level brick building with 235 other grade school and high school pupils. Yes students, Joel वहाँ स्केल माउंट में जो मौजूद पब्लिक स्कूल था वहाँ पर एक इस तरह के डिफरेंट लेवल्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाता था जहाँ पर स्टूडेंट्स कितने थे? 235. और वो स्टूडेंट्स डिफरेंट ग्रेड्स के, डिफरेंट लेवल्स, और कुछ उनमें से हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी थे. About half the students are farmers. और बेटा इन तमाम स्टूडेंट्स में से हाफ जो थे वो फार्मर्स थे, फार्मिंग से और फील्ड से और फार्मिंग लाइफ से ताल्लुक़ रखते थे. दिस ईयर जोल विल ग्रेजुएट फ्रॉम 8th ग्रेड एंड बिगिन 9th. और इस साल जोल जो है वो अपनी 8th ग्रेड को क्लियर करके 9th में एंटर हो जाएगा. बट हिज क्लास विल नॉट गेट लार्जर. लेकिन बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेंथ है उस क्लास की वो नहीं बढ़ेगी, एक्सेप्ट फॉर 3 foster children who came and left. Foster children बेटा, children in the care of a person other than their parents. जब आप बेटा आप तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो ना, वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और की केयर में, किसी और के पास रह रहे हों, उनको बोलते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन. तो वो 3 फॉस्टर चिल्ड्रन इस क्लास में आए और फिर उन्होंने छोड़ दिया. Joel has been with the same 19 kids since 1st grade.
Yes, dear students, you know this thing that Joel is having the same number of students from the very first grade. So, what does the idea we get from it? That we are very much clear that the students that are from the very first grade with him, so he is very much familiar. He is there to know each and everything about one another. तमाम स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा कि कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स क्या है, आपस में बहुत अच्छा उनका लिंक और रिलेशनशिप अब तक इन 8th ग्रेड तक डेवलप हो चुका होगा. I know every kid in practically the whole school, he says. Now, dear students, look at the sentence. इस sentence से ही आपको ये बात clear हो गई कि जब वो first grade से 8th grade तक 19 students अभी तक वो साथ पढ़ रहे हैं. So that's why what Joel is saying, I know every kid in practically the whole school. कि मैं हर बच्चे को, हर class fellow को, even अपने school fellows को भी practically, realistically, रियलिटी में, अमली तौर पर, रियल सेंस में मैं जानता हूँ. Some of those guys in schools on TV don't even know the people in their own class. Yes, dear students, now Joel is there to tell us something about the city students. When he is there to look some students on television, on TV screen, then he will get the idea that they are not even able to know about their own class fellows. This is the difference between a village life and a city life. That in village life, they are almost from the same background, forming same है, और even उनका level, उनका एक दूसरे को know how, उनका एक दूसरे को जानना. लेकिन बेटा जबकि वो हमें ये बता रहे हैं, sentence से ये show कर रही है authoress कि city life में students अपने class fellows से भी as much aware नहीं होते. Now come to the last paragraph of this page. Joel is a good student though reluctant to discuss it. Reluctant, unwilling, hesitant. When you are not agree, ना रजामंद, बेटा आप राजी नहीं हो उस चीज़ के लिए. So Joel is a good student though reluctant to discuss it. That he is not willing to discuss something about that. He is not there to show off his, you can say that abilities and his different opportunities, different, you can say that talents. Yeah, I guess I pull mostly A's, some B's. And now Joel is telling us that ज़्यादातर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस परसेंटेज रिजल्ट अपने इस एजुकेशनल कैरियर में ए ग्रेड हासिल किए हैं, समटाइम्स बी भी. नेशनल टेस्टिंग जोल स्कोर्ड एन ओवरऑल 99% और नेशनल टेस्टिंग में उनका क्या रिकॉर्ड रहा, 99%, मीनिंग दैट ओनली 1% ऑफ स्टूडेंट स्कोर हायर. सिर्फ 1% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जोल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो किया. His studies are typical of an 8th graders in the United States. Now, dear students, the authoress is there to tell us that if Joel is there to live in a small town in Scalemont near, you can say that Illinois, so he is not there to have the difference between the course curriculum of that school as compared to a school of other cities of America and other places of America. So, same is the case in that sentence. His studies are typical of an 8th graders in the United States. कि जोल जो कोर्स पढ़ रहा है, जो curriculum पढ़ रहा है, जो उसका syllabus है, that is the same as that of any other student of 8th grade in United States. Now he is there to discuss something about his course. We are doing percent in mathematics. कि maths में वो क्या पढ़ रहे हैं, percent, percentage वगैरह और इस तरह के questions. English, forget it. That English definitely वो तो जो उसके बारे में करें उसको discuss करना उन्होंने important नहीं समझा. In history, we are up to FDR. Yes, students. FDR are basically initials. Franklin Delano Roosevelt. I think so you should have some idea about it. If you haven't heard, then I'm there to tell you who was F.D. Roosevelt. He was 32nd President of United States. Okay? He was 32nd President of United States and he was very famous person. His presidentship was from 1933 till his death in 1945.
Yes, they are discussing his area, his revolutionary period in history. They are studying in history about Roosevelt. In science, we do experiments. Now, they are also telling us that about his syllabus, that what about in English, maths, history? Now, he is also telling us about science, that in science, they are doing different experiments. They are not lacking behind if they are in any small town. So, they are also studying science and they are doing experiments in science as well, like the chemical HCl, different experiments. बेटा HCl से आपने भी अपने 9-10 different levels पे experiments वगैरह labs में किए होंगे. And blowing up pieces of chalk, blowing up, blasting, destroying, यानी chalk के pieces को लेके different experiments और उसको blow करना, और ये सब चीज़ें बेटा उन्होंने वो curriculum discuss किए, syllabus discuss किए कि वो इस तरह का content पढ़ रहे हैं, syllabus पढ़ रहे हैं अपने इस 8th grade के level पे, जो अपना वहाँ पे वो स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं. Now, dear students, if I am talking about Pakistan, just imagine what kind of scenario over here in the educational system. If you are looking in the broader sense that in Pakistan, we are also having almost the same level at the same grade. Whether there are different books, but they are basically having the same content, the same purpose, the outcome is the same. Okay? Is it the case? Do you agree? Yes, dear students. Now proceed toward the next page, page number 42, from the very first line. But when the school bus drops Joel off and he runs up the quarter-mile lane to his farmhouse. और जब बेटा फॉर्म हाउस यानी अपने स्कूल बस जोल को ड्रॉप करती थी, स्कूल से वापस ला के छोड़ती थी, तो फ़ौरन जोल क्या करता था, अभी वो 1/4 क्वार्टर माइल यानी 1 माइल का 1/4 पोर्शन वो उस लेन पर, उस कच्चे रास्ते पर अपने फार्म हाउस की तरफ जाते हुए क्रॉस करता. स्लिप्स आउट ऑफ हिज स्नीकर्स. Yes, dear students, have you heard the term sneakers? Sneakers, footwear, casual rubber shoes जो आप बेटा यूजुअली पहनते हो. एंड वो अपने फ़ौरन क्या करता था, स्लिप्स आउट ऑफ हिज स्नीकर्स यानी अपने शूज़ फ़ौरन उतार के क्या पहन लेता था, पुल्स ऑन हिज बूट्स, फ़ौरन अपने बूट्स पहन लेता था. सो व्हाट डज द टर्म बूट्स मीन ओवर हियर? Boots are basically the footwear that covers not only the feet but also your ankle as well, and sometimes more than ankle, your lower part of the leg as well. Okay, so there is a little bit difference in the structure and you can say that उसकी बनावट, उसको शो देखने में ना हैं दोनों शूज़ ही हैं, दोनों पहनने के लिए काम होते हैं. लेकिन बेटा स्नीकर्स वो बहुत हाई नहीं है, कवर करने के लिए सॉफ्ट का ये जो आपके पास जो शूज़ आते हैं रबर के. लेकिन बूट्स जो हैं वो स्पेशल आपके डिफरेंट पर्पस के लिए जब आप पहनते हो, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के लिए या किसी काम के लिए, हैवी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, इस तरह के वो स्पेसिफिक फुटवेयर हैं. नाउ किस तरह के पुल ऑन हिज बूट्स, then his life is no longer typical of an average teenager. Yes, a very good line, that student में a very good student, after coming back from school, he is no longer a typical teenager student. You knew this thing that Joel is a teenager, but he is not behaving like a teenager after coming back from school just because of his works, different works that he is performing at home. His footgear is the clue. और हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि वो अब एक टीनेजर नहीं रहा, एक अडल्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है? हाउ? फ्रॉम हिज फुटगियर. फुटगियर फुटवेयर, उसके इस बूट से हमें अंदाज़ा हो जाता है. क्ल्यू, हिंट, इशारा, सिंबल, सिग्नल. Joel wears boots every day, no matter what the season is. बेटा ये उसकी डेली की रूटीन थी. ऐसा नहीं है कि किसी वक्त उसने आया, बस मूड पे हुआ, दिल हुआ, काम किया. No, this is not the case. Whatever the season is, whatever the temperature is, whatever the weather is, he is there to come back from school and then wear those boots every day. That's because he does chores every night after school and for several hours on weekend. Yes, dear students, what is a chore? A small routine domestic task. क्या है बेटा? Small routine domestic task that you are there to perform on daily basis, जो आप घर के छोटे मोटे काम काज करते हो.
सो दैट्स बिकॉज ही डज, कि इसलिए कि वो हर रोज़ रूटीन में रात के वक्त या फिर स्कूल से वापस आने के बाद और वीकेंड्स पे तो कई कई घंटों तक ही इज़ देयर टू परफॉर्म डिफरेंट डोमेस्टिक टास्क। किस तरह के टास्क थे वो? द चोज आर बूट वर्क। बूट वर्क यानी वो बूट पहन कर ही, वो शूज़ पहन कर ही वो ये काम कर सकता था। किस तरह के काम थे वो? हार्ड, हैवी एंड समटाइम्स डर्टी, कि बाज़ औक़ात उसको बहुत टफ, मुश्किल काम, भारी काम, और बाज़ औक़ात डेफिनेटली फार्म हाउस में जाना, फार्मिंग में जाना, खेत में और इस तरह, तो वो थोड़े बहुत गंदे काम, मतलब उसके पाँव गंदे हो जाते, कपड़े, तो इस वजह से उसे वो बूट पहनना, बूट वर्क, इस तरह के वो काम थे जिसके लिए उसे इस तरह के शूज़, फुटवेयर पहनना ज़रूरी था। The daily chores that Joel does help are to run the farm and to support the family. और ये जो रोज़मर्रा के छोटे मोटे डोमेस्टिक टास्क हैं जिनमें जोल हेल्प आउट करता है फार्मिंग में और खेती बाड़ी में और अपनी फैमिली को हेल्प आउट करने में, सपोर्ट करने में, Joel is a teenager but he does the work of an adult. Very important, significant sentence. You can underline it as well. In the second paragraph, second line, Joel is a teenager, but he does the work of an adult. Yes, students, now you can get very much clear idea about Joel. Who was he? He was a teenager, but because of his different domestic tasks and helping out his family, he is there to behave like an adult. Unlike most families where the parents alone make the money, he is not like those families कि जिनमें सिर्फ बेटा पेरेंट्स होते हैं और वो ही इनकम के लिए हेल्प आउट करें, मदद करें, काम करें, मेहनत करें. नो, he is also there to make efforts for earning money. Farm families work together. This is the difference. बेटा अगर आप सिटी लाइफ की तरफ आओ, वहाँ पे अक्सर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि they are their self to provide money to fulfill the requirements of the remaining members of the family. But this is not the case with the farm families. Farm families work together. Each child's labor is not only important to the family's well-being, it is essential. Well-being, welfare. ठीक है? Well-being बेटा, welfare. And essential, important, vital, बहुत लाजमी, जिसे आप कहते हो कि बहुत ज़रूरी है ये. कि अगर आप फॉर्म फैमिलीज़ में देखें कि जहाँ पे वो फॉर्म फैमिलीज़ के हर बंदा, हर एक मिलकर इकट्ठे काम कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है, सेम इज़ द केस कि उनकी चाइल्ड लेबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है एक फैमिली की डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए. It is essential, not only important, it is very vital. यानी उन फॉर्म फैमिलीज़ के लिए वो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. This is enough for today. Thank you very much, dear students. Have a nice day, and if you have any problem, then you can ask in the Q&A session. Take care. Allah Hafiz.